2035 में एक कैंसर एपिडेमिक होने वाला है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिसको हम लोअर इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप कंट्री कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ेगा। कैंसर इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ पर्सनल बैंक्रप्सी। गो अगर जन कंसे देवोल नेरान 90% चांस यह कैंसर से द्रामुत देवोल, बिकॉज इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। We need better planning, we need more money, and we need smart programs. तिछो ने क्या ये चाइल ने क्या कि ड्राइवर बना हवन से हेल्थ मिनिस्टर पतक द बनाई विश्व से हेल्थ प्रोग्राम. How is that going to happen? The reason I came back from the west was because I wanted to be near, close to Kashmir. मगर युस ये तो बीमारियां अस सच वुनती चलान. I love Kashmir. I love its people. Some people find that crazy because I feel that the DNA of the Kashmiris, whether they are Pandits, they are Muslims or they are Sikhs, it's the same. ये कांगर छना इशी ऐतत ये छना इशी कराए यूज अथ वुशना हमने खतरे या क्या करने खतरे. मगर अगर बे ये कांगर तुलन तो मैं करकने से खुश बहके ये ठास रित्ते हाँ है ना कर लगी ये खून पर तय मतलब गो कि वन करूँ कांग्रेस बैन. हमने भी यहाँ मॉन्यूमेंटल गलती की जो मैं बोलूँगा यहाँ के लोगों में, और जो जिसका हम अब खमियाजा उठा रहे हैं और पता नहीं कितनी देर तक वो उठाना है हमको. हम उसके खुद जिम्मेदार हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर एक ने अपने अपने तरफ से तरीके से गलती की. आज सड़क बंद होती है 3-3 घंटे के लिए तो सहो उठाओ. बच्चा आपका बिलखता है, वो अस्पताल नहीं पहुंच सकता तो बिलको. क्यों की ऐसी चीजें? वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द हेडलाइंस. आई एम योर होस्ट नज़ीर गनाई. दोस्तों, हमारी इस प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे अशखास से करें जिनका डिफरेंट फील्ड में कंट्रीब्यूशन है. आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है. आप उनका अपना फील्ड यानी मेडिसिन देखें, आप पॉलिटिक्स देखें, आप आर्ट एंड कल्चर देखें. ही हैज़ एन एक्सटेंसिव research on each and every aspect of these fields. He is Dr. Sameer Kaul, India's top-notch cancer specialist. Dr. Kaul, welcome to the show. सबसे पहले बात करेंगे, चूँकि कश्मीर की अगर बात करें तो कैंसर इज़ ऑन सर्ज. I mean, you have a lot of reports which suggest us that cancer is rising. What do you think? What's the reason? At the very outset, Nazir, I'm extremely honored that you and the Observer Group मुझ नाचीज को, I consider myself a nobody, and I like to feel like that. नहीं, आपका तो अब एक contribution कि आपने ये शाम मेरे साथ गुजारने के लिए सोचा यहाँ शंगरफ पे, तो मैं I feel honored. We are honored too. अब आपके सवाल का जो जवाब मैं दूंगा, कैंसर is rising. It has always been there from times immemorial. उस वक़्त इसका नाम नहीं था, लोग मर जाया करते थे. आहिस्ता आहिस्ता हम वो टीबी का नाम आया तो कहा टीबी सोहजमोद टीबी से पांचाही तो पत शेठ वो रेस मारा सारी बेमार गसान ना वो बेमारी कहीं तो पत युथी अस मेडिकल कॉलेजस मज गए. We were told anything above 50 who's gravely unwell is probably a cancer and no use to treat because they are going to die anyway. That was the scenario. Today, you and me hope to live till 85, 86. The average life expectancy has increased. लोगों की
उम्र बढ़ गई थ्रू आउट, जब उम्र बढ़ गई तो ओल्ड एज के कैंसर भी बढ़ गए। वो कहाँ जाएंगे? प्रोस्टेट कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, दीज आर कैंसर्स ऑफ द ओल्ड एज, सो दे ऑल्सो गॉट एडेड। आज इस चीज़ का नाम है, आप इसकी बात कर रहे हैं, इसको लिखा जाता है और आजकल रिकॉर्डिंग भी करते हैं। जिस हॉस्पिटल में जाओ एक रजिस्ट्री है, it gets registered as well. So, better recording, old age cancers having gotten added to the scenario, and lifestyles changing to a situation where more cancers are developing. Obesity, junk food, alcohol, tobacco usage, all contribute to increased cancer. Hormones play havoc. ये सब बढ़ रहे हैं और इनफैक्ट 2035 में एक कैंसर एपिडेमिक होने वाला है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिसको हम लोअर इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक ग्रुप कंट्री कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ेगा। तो उसकी क्या वजूहत है, मतलब क्या गई अमि मूजूब बिकॉज ये तादाद बढ़े, नंबर्स बढ़े, पहुँचन ऊपर की funds are always, even in North America, cancer is the leading cause of personal bankruptcy. Go अगर जन कहीं देवोल नेरान च 90% chance च इम्सस ये cancer से द्रामुत देवोल, because it costs a lot of money. Cancer एक दवा आई, नई treatment आई, no immunotherapy, targeted therapy, they all increase your life. They make even advanced cancer people to live longer, but it comes at a huge cost. Akak injection cho lachan rupiyan mas, lachan rupiyan hundi वहाँ. How many people can afford it? And concept of insurance chunki hi. The insurance penetration in this country is 13.75%. That's nothing. Nothing. Bilkul. How are people going to afford it? Government doesn't have that money to put in. How much is the growth money that is being spent on the health of individuals in this country? 3 point something. That's nothing. It requires more money for research and development, because if you don't do research and development, no new things are ever going to come up. Better facilities, more importantly, equal access for all the communities to access this care. Not only it should not only be for the rich, it should be available to all sections of the society. It is easier said than done. You should one on has variya asan, but karne behmo. We are fragmented, economic and social. It comes pari passu. It comes concomitantly with economic justice. Unless there is economic and moral justice in our populations in this country, achieving that state that you and me are talking about is going to be almost impossible. अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब एक प्रॉपर अख पिक्चर गई तो सन यम यथ प्रोग्रामस में तिम मोस्टली तिम कशिर आसान यम जानन छ आसान खास कर सान डॉक्टर साहबन निश चूंकि युथु कैंसर कत करान नफर या सो फैमिली सो आसान हाफ डेड तमे साथ व्हाट इज द आई मीन कह नफर गो अमिस गो कैंसर डिटेक्ट what should be the immediate response of that family, because cancer is not something that a person gets. It is a family that gets into that mode ke un kya kar amis un kya kar ad se zameen te kanan ad se panun jaydad sana kinit tim chi agar ye banyo treatment tim dili gasan ya bomb ye gasan tam khadre chunki ak doctor asit kyunki early detection gas ek family kya paj karnat agar se me panun zanak tele persayb yor aitsa sawal अस क्या गो स्टेप टू अस पे गो दोमिस पे गोड क्या करो न कोशिश कैंसर गोस न गन बिल्कुल च प्रस मे तमें खतर क्या पज कर बे ऐ शौक सान जवाब दिम बॉडी थवन लीन एंड थिन बॉडी मास इंडेक्स गो अगर चे कंटेंट ऑफ फैट बॉडी में ज्यादा रोजी ये तथ वन ओबेसिटी मॉर्बिड ओबेसिटी, then you have risk factor number 1. 1/3 of cancers can be prevented by simple changes. Go su cheez jise atas maz chui
ये जन से पान हेका करित अच्छा वना मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ते ये अस हेको करित ओ 1/3 इज जेनेटिक गो ये और आव मेनिस जीनस मज लिखित अंदर मेनिस डीएनए मज के हे ये सा चीज म्यूटेशन या सा चीज जीन बुथ सा नेरी से कुनी जनरेशन मजन ये नोन पत ये पान वन रिश्तेदारी मज बेमो खानदर करने तथ चांसेस ज्यादा बड़ा ये वोन मे अमे खतर अमे मूजूब क्या यप सह प्रोन रिवाज वन चलान सो इट इज रेलिवेंट टू अस इट स्टेज विद इन इट मल्टीप्लाइज बिकॉज 1/3 cancers come in your genes. These are non-modifiable. मतलब ये अत हेकक न चेंज कर ये वक्त ये ते वने ये वक्त time will come when you will be able to rewrite your genes because we are going that way as we proceed. ये लेस कथ रोज़ो करान अगर इस मुद्दे रूद तिम कथ वने बच्चे कित पटी क्या से वना अस हेको बुथि पन जीन ते रीराइट करित क्या आज गए हतिन खबरदार गसिन आज वारिया चीज पता यम न 5 वरी ब्रोंट पता आज टेलीफोन बजा पिंग पिंग FDA नसा कोर दवा हो यह सा ये म्यूटेशन करान अटैक अख दवा फलाना खेक तो पकान नफर अथ पे these because billions of dollars are being spent on research across the globe because and that is why वो उस रिसर्च का फायदा क्या जो ट्रांसलेशनल ना हो ट्रांसलेशन गो मतलब ये गछ अमुक फायदे अमे रिसर्च फायदे गछ मेनिस पेशेंटस वातुन मेनिस हमसायस वातुन मैंने रिश्तेदारन वातुन मैंने दोस्तन तीन फैमिली वातुन what use is the research which stays behind closed doors and within 4 walls of academia? It must reach the people, it must benefit, it must increase lives, it must change the quality of lives. So prevention, which means lifestyle modifications, eating balanced diet, less fat, less saturated fat, less nitrites, less red meat, lean thin bodies which are exercising themselves, whether walking or running and not becoming obese, drinking alcohol in moderation and avoiding usage of tobacco. These are known factors. We know that 1/3 of these cancers are caused. So the moment you take care of this, you knock away 1/3 of the cancers straight away. Isn't that easy? So prevention and getting a checkup done at the right time. So it is called secondary prevention. Go. अगर वहाँ ये कैंसर गसनुई छ, क्या चीज़ छ यम नहीं फूडस मज छ पिकल अश खवा आचार तथ छ preservatives. Anchar as carcinogenic. There's no doubt about it. We like it, but we still take it. Anas, bus tawai wana beich is karan palwan maz dyes. Acha. They are carcinogenic. Coal chu nebar gasa pollution chu atmosphere maz they all contribute. But iman cheesan because they are linked to development, we can't do much about them. So what is the next best thing that you can do? Secondary prevention. So go agar ye gasnu chu cancer telgo chi ratanu ye liye early ye hai izan at partama chuna sa bach log Danimas yele bach log tami saat gasi cancer ratna and then you nip the evil in the bud. Early detection saves lives. You can save 95%. So if you could not prevent it, then at least catch it when you can do something about it. Absolutely. Unfortunately, in this country, we are still treating cancers. 65% of our cancers come in stage 3 and 4. It is because there is no early detection. It is because resources available. It is because there is no early detection, and most of our cancers are come in late stages, and that is because of many factors. We need better planning, we need more money, and we need smart programs. तिछुन क्या ये चाइल ने क्या कि ड्राइवर बना हवन से हेल्थ मिनिस्टर पतक द बनाई से हेल्थ प्रोग्राम हाउ इज दैट गोना हैपन It can't. You require knowledgeable people to keep making dynamic, strategically effective health policies, better value healthcare, better value go.
कम पोंसन मज जान हेल्थ केयर which can be reduplicated ये योत न क्या ये हस्पताल मज क्या across the population ये जन टंग मर्गी मेले सु गोस मेलुन कोकरनाग it must be standardized for everybody otherwise it is unfair it is morally unfair तवै वन्यो मै moral justice economic justice is very it comes second ये छ सोरे कुनैकस असली go being fair about knowledge, fair about research, fair with people, fair with everything. We make shortcuts, we make compromises, we are cash strapped. Keh cheez chun ase panas tam, keh ch. Dr. Sameer Kaul, whose journey actually started from Srinagar, Burnhall School she paran, pat she Government Medical College, और उसके बाद इनकी फ्लाइट दिल्ली और दिल्ली के बाद आगे लंदन. इस पे हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि मेडिसिन मज गसन क्या उस अग ड्राइव एंड पत कित कहीं कोरता ये सफ़र गोडनिच कत गई नज़ीर साहब ये कि जर्नी न श्रीनगर पे गई न शुरू सो कह सो गई चोकरी पे पुलवाम पे पुलवामा चोकरी पे गई जर्नी तमि सात शुरू ये वन बह जामत ये बह वन ख्यालन मजे आस कि वन यी शुर चलन पे चोकरी अमे मूजूब कि तत जोलुक जिंदे चूर तथ वोत हुई बह जामुत ये पंडित रामचंद काक प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तमिस मकान अत शाह कोल पे ये नबर अत नवाब आजाद ब्रो कन ये सह सुना ये सह चरस तकी अपर खपर तत बेहान ब्यूटिफुल तमुक त वन कस ये वन तत बेहान बुथ कन मेडिकल कॉलेज तत तिमन तिम ज मकान इत पे लकड़ हंद नबर कुन द्रामुत तथ मज बह जामुत क्या सह पे इन रातो रात चलन तत हेतुक किरायस पे तथ मकानस मज बह जामुत तवे मा मे कह ख्यालात तमिस सतन रलान तमिच कत कर पकक ब्रो सह मे वन कत कह बना यह lot of things are in the genes today they say most of medicine says that your personality is actually born in your womb when you are in your mother's womb that even psychiatric illness tati bana sahi baat hai that's how science is progressing and it may be true because I think about it why do I think today like Pandit Ramakrishna Chand Kak because maybe I was born in his house where he did it was he wasn't living there so basan pan hote baagi sundar tat wana magar ye asli gar tati zamut tati pet janab ali pat Srinagar Wazir Bagh so budbavan meon hot makan that was Bagh Wazir Ramsarand Bagh da kya tha us naw so prime minister Maharajas that was Bagh to that was Nanda Kustain nebrim temis makan board so hot me budbavan हालांकि पत बह बुढ़ बबस ये बह तमिस ब्रोट कन सीट पे बिहित सह साइकिलस पे तमिस लकट सीट सह नेरान सह मे पानस सत तुलान तमिस बह तम सात पृछान ये मे होश हेतुन मे तम सात पोंसी बोड़ मोहन्यू जमींदार चोक बाग वाग क्या हो ये वुडरी पे मे क्या हेतुत यप गगरिबल किन बड़ मोहन्यू यप डलस सतन सह दपान योर तम सात जिम्मे हेवान यून कह ये बागै बाग ये कहें ये इंसान तवे होत तत तमिस पृछान यम चीज़ वारिया चीज़ पुछ मे तमिस तत बह जामुत पत वार वार ये ठीक पठन बड़ जान रोज में ये my life in my school which was Burnhall and then Government Medical College Srinagar where I got selected for MBBS and I started. Times went bad, but then I worked here for a long time. I worked at the Kashmir nursing home, Gupkar Road. I took a rural posting also in, I think, Magam and many other places. It was a lovely period, beautiful period. It changed my perspective. And then I went for my further studies to Tata Memorial Hospital, Bombay, and then from there to the Royal Marsden Cancer Hospital, London. And now I came back because मेरा idea कभी बाहर west में I was in love with Kashmir, you know. अगर suppose बोजक इस bloody दपान छना
I may not have fallen in love with girls at young age, but तथ सित निभो में सो लव अफेयर मे गो लव अफेयर या तावन कशीर सतन नॉट एंड आई ट्रीट एंड मैंने अभी तक साथ नहीं छोड़ा. दैट लव अफेयर कंटिन्यूज. आई नेवर स्टेड अवे. I kept coming back, whether I was in Bombay, Tata, whether I was at the Royal Marsden in London, and then I came back. The reason I came back from the West was because I wanted to be near, close to Kashmir, and Delhi is 1 hour away by flight. With God's grace, I can afford it. Every weekend I come here, so that love affair continues. यम चीज़ ने मैं बचपनस मज हेक करित क्या मेडिकल स्टडी पर्न दे नो पर्न पता नो पर्न पता नो पर्न यह क्या थिंग्स चेंज सो मच. इसलिए अत पर्नस मज रूद यम कुल यम पहाड़ यम पोश ये बात ये मौसीकी ये रोज दूर. बट ज्यादा काल चोल मसन बना चाल दूर चोन. तो as I grew older, I grew more akin to them, and with God's grace, I'm trying to do all those things that I could not do when I was growing up. Because वैसे भी मुझे लगता है कि मैं कोरन जिंदगी मज कहीं मैं पन्नी जाए एहसास कम तरी कि यह बह हेका करित तना कोर मे सह गो मतलब बह कमा ज्यादा पोस बह कर यह पान मे बासे कि मे पजे कर कूता बह हेका करित. जिंदगी मज दो किस्म आसान नफर थी याद नजीर साहब. अख गो गिवर ब्या गो टेकर. यमिस दिन सो लोल सो पोस सो पावर सो मदद तमिस दिन. यमिस रटन तमिस नसीबस लिखित रटन. अगर अम रोल चेंज करो करान लोग गलती मे कर मज मज ये ना दिमाग डल इंसान ये तुम गफलत कर न तुम खुदा सब बन सह मा हे बन. इसलिए गफलत करवन रोजन तम नश हेचुन मगर बाखबर रोजन कि गलती कत गई सो सुधार. वन ये गिवर तो टेकर बस गिवर बे नसीबस रटन ज्यादा कह मे दिन तथ मज मेन खुशी. वन अगर स पृसक अमीर नफरस दपस यह बिल गेट्स या यह वारन ना तुम बड़ थद नफर अमीर तरीन नफर यम दुनिक दपान इन गुतल पोस टॉप 10 रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तिमन क्या गसान पत तिम क्या बनावान यम फाउंडेशन पत करान वैक्सीन पत करान HIV पत करान क्या क्या तूत पासिल हासिल करित पत तिमन समझ गसान ना ना कुनी पोसा मगर पोसा ना सोरे कह तम सात तिमन तरान फिक्री क्या अगर स दित हेकक तो हेकक जिंदगी बदलित यू आर नेक्स्ट टू गॉड. पत क्या फर्क रूज तो खुदा सबस चाहे या भगवानस या क्या नाव चे दिन बह त्रा पे सह क्या फर्क रूज गो चे मज अगर कुन वजह सतन खुशी दिख जिंदगी बदलावक रोजगार दिख जानकारी दिख कुन किस्मुक मदद करक गो यू मेड अ डिफरेंस इन हिज और हर लाइफ. दैट इज अल्टीमेट पावर. Ultimate power. तमें होर छुन power कहीं. It's like God. That's what God is supposed to do. Create destinies and create people and create lives and make this world run. So you are next to Him. तमें खुद बोर्ड क्या. So that is the quest. That is the quest and that is the journey to be able to change lives towards betterment, towards happiness, towards peace, towards fairness, towards fulfillment. You are rich. Dr. Sameer Kaul is someone who has many facets. सियासत की बात करें, then art की बात करें. अभी सियासत पे हम बात नहीं करेंगे. सियासत को हम बिल्कुल एक आखिरी मरहले पे रखेंगे. लेकिन आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो वो पान ये दूर रोज सपदोमुत सठा यम सात ये पार्न किस मरहलस मज तो खास तौर अगर वो क्योंकि
मैं तो पर्सनल क्या रिलेशनशिप थे और उसमें मैंने देखा कि आपको कश्मीरी फोक और कश्मीरी जो छकरी है अत पे वारिया डीप नज़र तो पता कुस कम नवियतुक गेवान बजावान तो यम वारिया कम क्या तिम लुक यम अम नवियत किन बोजान तो ये शौक कित गो हाउ डू यू गेट इनटू ऑल दिस आई थिंक इट मस्ट हैव बीन या ऐसे अगर पोज बोजो इसमें यवान छुना जीनो मज वन चवोनी में देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जीन्स पत कैसा एनवायरनमेंट मज यवान दोस्त कम ٲسِس गॉडनिक दोस्त कम ٲسِس सु गो एनवायरनमेंट अंद पे क्या माहौल युस जन पत इंसान किस इंसानिस पर्सनैलिटी मज सही टाइमस पे ग्रोइंग अप पीरियडस मज बिकॉज बाय द टाइम यू आर 9, 10, 12 most of the stuff is done. Your असली personality यह जन से इंसानस मज अंदर ना यार आदित्य में बदल you can give it whatever name कश दपा he doesn't have the spine to do it. What does that mean? Spine go अमिस ना छना कहनी इना सु क्या basically छु वना अमिस ना छना सो personality अमिस छई ना अंदर सख्तई छस ना अमिस छन सो personality nature ही छु all names given to this inner thing which gets formed right from very young, and some people say when you are in your mother's womb, and some of it comes in your genes. So the quest, the talab, the thandai for beauty probably comes from my mother. Just my was क्या सोचूं वंते जिंदगी वन dementia थोड़ा गोमुतन कुछ साच प्रजनावा कुछ साच छन but with God's grace she is with us, with me. That is one of my richest सारी खुद ज़्यादा गाने युस में विंकस हेरिम. So she is my mother live with me every day. I sit with her every day. तमी छु में सु असली love of beauty, color, tones, ये rhythm, music क्या गो हु क्या यह क्या यम मोल मोन बदल तबीयत सोस कम कत करान तमिस बदल सोस मे वन तमिस मे अक दो है ये अगर बड़ सिंपल सवाल यू मे फाइंड इट स्टूपिड आई थॉट आई व्हेन ही वाज एन इंजीनियर तमिस वो मे अक दो मे सो मेनी ऑफ योर इंजीनियर्स आर रिच मे वो इंजीनियर रेजी रिच बस बस परनस मज जान एंड यू नो इंजीनियरिंग सीटर्स ज्यादा नंबर आसान जरूरत क्या व्हाई डिडंट यू गाइड मी टुवर्ड्स इंजीनियरिंग दोप ना ये बुथ पकक तरी पाने फिक्री बिकॉज आई वांट यू टू मेक become big on your own, not compromising and not going into things like corruption. Chances of that happening. If you become a doctor, you heal people, you create that skill in you, you will realize that you don't need to thief. You don't need to do any corruption, and still you will get what you want in life. So तोर में वार फिक्री तेमनियों में तम साथ मगर the answer to your question, the creation for beauty probably comes from my mother, and I love it. Basically, nature. I still love, I believe in it. These gems, I still wear them. You may find it stupid and unscientific. I don't. I love them because slowly over a period of time I realized that these are all alternative, semi-scientific disciplines, and they all have a meaning. There was a time when medical science developed in Europe. One of the subjects that was included in the curriculum of medical colleges was called rhodorhinology. What did kya matlab was? Studying the features of Nazir Ganai. The shape of his nose, the shape of his fangs, the shape of his body, and then trying to understand what diseases he may have at that point of time. Study of physical features to tell you it, because it was not precise, so it fell into disfavor and was excluded, and rightly so, because everything has to evolve. Go you var aza se tyas ne paga ke ye paga magar yus yetuk bemaria as such a winti chalan. I love Kashmir, I love its people. Some people find that crazy because I feel that the DNA of the Kashmiris, whether they are Pandits, they are Muslims, or they are Sikhs, it's the same.
There is only a minor difference. People don't like it, you know. Look at the chiasm that is between Kashmiri Pandits and Muslims today. For instance, sorry for being a bit political, so which winkes kota duirir chune. Magar, elibo mai kunsad butter manan tishu damas hai farak na chane ki ya chu kunai kisasore. They may not like it, but the fact is that it is true. Yeli sadki pets. When you put 4 lines on a highway and tell people in Delhi to drive in the lanes, that happened 20 years back. Are people driving in the lanes? No. It takes longer time for that to become behavior and that to go into your sensibility, into your nature. That is a change in the behavior, in the personalities of people. It cannot happen by twisting arms, putting you in jail, making you do something. No. You have to understand that is the right way to do it. And that takes time. Change like that, which has to stay and evolve, takes time. Corruption of this professions की बात करें, I wish medical profession तिचु यात में चल खास तौर इस करो कशीर हिंदी का. There are a lot of freebies that are being offered to doctors, and when you have such kind of menace in the system, and that too in this medicine, I'm sad kuta compromise shasan doctor to kuta shu matlab gasan ekis agar isho as ke doctor sitika. I think patients also get to know ke dawa chu unnecessarily likhmut, kyunki you are at a position where your words can be taken seriously by people in the profession. तो कुता जो बासान ये मैंने कुता rampant छु खास तौर से कश्मीर में. कश्मीर हंस काथम करू तो because this is इज़न कश्मीरी छु, ती छु न्यूयॉर्कस मज़दे, ती छु लंडनस मज़दे, मैं छु OPDs Africa's मज़दे, ताजिकिस्तान मज़दे, where I go and I see patients. It is universal. The point I am making, so it's not only about Kashmir. When there is a change in a particular thing, magar when zan man hai butse nazir saba akhkar ye kaangar chana ishi etet ishne ishi kara is use athvushna amne khatre ya kya karne khatre magar agar bhai ye kaangar tulant me karakne se khosh behkai se thas ritte sahi ha hai kana karit lagi se ye khoon but time ko matlab ma go ki ban karuni kaangri ban it is misuse. Why once misuse cha? Yes, there is misuse, but the quantum of misuse is less. The quantum of good use is more. That is why you cannot make this as the law. You have to make this as the law. इसलिए लोग उजागर करें, monitoring करें. Look, एवं मतलब गो कि गिलास मस्जिद त्रेश चवां पर गिलास से लगी थी लगी ना तो मतलब मको गिलास गशना आसुन. You have to go in the right direction. You have to cut out its misuse. For instance, in media, like we are here today on TV, do you know that 79% of disinformation on digital media and on social media? तो मतलब go media करूँ ban? You can't do it. That is misuse. Monitor that, punish that. Be intelligent about it. Change people's attitudes by providing more information and convincing, not by twisting arms and banning. That doesn't do anything. पंडित रामचंद्र काक की बात करी आपने और तय करूँ दोनों फार्मर in fact दोनों फार्मर चीफ मिनिस्टर से very closely काम उनमें मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला और आपको एफिलेशंस जो है पहले से ही रही तो युस तुहद पॉलिटिकल जर्नी पॉलिटिकल सीन who do you think which party is basically trying to address this whole issue in a vibrant manner? You know, the fact is आपने रामचंद्र काक की बात की और I don't know whether you are aware of his biography that उसका नाम क्लियर करने के लिए unfortunately हमारे सिनेरियो में कश्मीरी जम्मू कश्मीर या इंडिया के लोगों में ये आइडिया है कि रामचंद्र काक ने गद्दारी की वो किया बट वो नाम मुझे पहले भी पता था वो सच नहीं था. He was a technocrat. He was an archaeologist.
ट्रेंड, उसकी आर्कियोलॉजी की किताबें जो हैं वो आज भी कंपेंडियम्स मानी जाती हैं. ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वॉज नॉट ट्रेंड, ही वॉज पोलिटिकली नाइव, डिप्लोमेटिकली नाइव. उस वक्त महाराजा साहब का चल रहा था, उनकी वाइफ बड़ी पावरफुल थी, उसका भाई बड़ा पावरफुल था, उस वक्त की कोटरी थी, वो क्या चाहते थे, उस वक्त क्या था, और यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो सिनेरियो यहाँ बना, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो. उसके सिद्धार्थ काक ने अभी किताब लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट कश्मीरी पंडित प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लव, रिडेम्पशन एंड एग्जाइल. उसने नाम उसका क्लियर किया है, और उसमें कई चीज़ें मुझे बड़ी सच लगी उसमें कोई. बट उसमें एक जुमला वो लिखता है कि जब वो वापस आया, जब उसने नाम सारा क्लियर किया, उसकी तनख्वाहें बंद थी, यहाँ से जलाए वतन हुआ, कभी हिमाचल में रहा, कभी लंदन में रहा, ही वॉज मैरिड टू फॉरेनर. जब वापस आया तो एक कश्मीरी ने उसको, जब वो बागे सुंदर गया, एक कश्मीरी, लोकल कश्मीरी उसके पास गया, वो फैमिली वेट कर रही थी उसको. तो वो ऐसे लगाए हुए थोका आसमानस, मगर तिम पे बुच्ची ऐसी क्या तुमने we spit in the air, but we realized later on that so the advice that Pandit Ramchandra Kak, as an honest and sincere prime minister to a Maharaja, gave at that time for a Kashmir which was mutually friendly to both countries, was, even till this date, I feel it was the best advice and the most honest and sincere advice that could be given by any prime minister to his regent. And that, I think, the Maharaja also wanted it. But at that time, under political pressures, the Maharaja withdrew, and he was made the scapegoat. वो उसकी बात, वो छोड़ो, पुरानी बात हो गई. लेकिन as far as the local party, मुझे लगता है कि जो रीजन है, जैसे हमारा ये खिता है, रीजन है, अथे तो कहते नाव. Region is linked to identity, it is linked to culture, it is linked to way of life. उससे बड़ी कोई चीज नहीं है लाइफ में. Your lifestyle, your way of thinking, your identity. A regional party is best placed to address those. जो उस पार्टी, उन्हीं लोगों से निकली हुई लोग अगर उस जगह को वो पॉलिसीज बनाएंगे और ऑनेस्टली गवर्न करेंगे, तो वो बेस्ट रहेगा उधर के लोगों के लिए, क्योंकि टू वे ट्रैफिक होगा. इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी लैंग्वेज अंडरस्टूड की, इनकी एस्पिरेशंस एड्रेस की जाएंगी. अगर इनमें गलतियां होंगी, उनको गाइड किया जाएगा राइट वे, और करने वाले लोगों में वो दर्द होगा, वो आंख में नमी होगी, शर्म होगी, और वो पानी होगा जिसको एक रिलेशनशिप में, सिंसियर रिलेशनशिप बन के, तभी उस खित्ते का फायदा होगा. फॉर इंस्टेंस, ग्लोबलिज्म का मैं अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन मणिपुर में हमको कैफे कॉफी दे, उनके माहौल में, उनके कल्चर में, और वो पीला रंग करके या मैकडोनल्ड रंग, क्या जरूरत है? Why should I see the same thing everywhere? Globalism has it, but globalism का मतलब नहीं होता है कि आप हर जगह को एक ही जैसा बनाओ. उधर की आइडेंटिटी, उधर की कल्चर, उधर की पहचान, उधर का आर्किटेक्चर, उधर का बोलने का तरीका, खाने का, पीने का, ये सेक्सेशनिज्म नहीं है. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. दिस इज नॉट सेक्सेशनिज्म जो आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं अलहदगी पसंद नहीं हूं, बट मैं प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, आइडेंटिटी, वे ऑफ लाइफ रखना है. गलतियां हर कौम से होती हैं. हमने भी यहाँ मॉन्यूमेंटल गलती की, जो मैं बोलूँगा यहाँ के लोगों में, और जो जिसका हम अब खमियाजा उठा रहे हैं, और पता नहीं कितनी देर तक वो उठाना है हमको, हम उसके खुद जिम्मेदार हैं. चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक ने अपने अपने तरफ से तरीके से गलती की. आई बिलीव इट. अरे हम कब से ऐसे लोग बन गए कि हम चीरने लगे लोगों को बेंडसाओं पे? इज दैट आवर कल्चर? बट हमने किया. वो क्यों किया? आज सड़क बंद होती है 3-3 घंटे के लिए, तो सहो, उठाओ. बच्चा आपका बिलखता है, वो अस्पताल नहीं पहुंच सकता, तो बिलको. क्यों की ऐसी चीजें? सही बात. क्या गुबार चढ़ गया था? अगर अपना, अरे
जम्मू कश्मीर के लोग तो हिंदुस्तान की छाती पे थे यार, वो उसके ऊपर, एंड दे यूज्ड टू गवर्न, दे हैव रन दिस कंट्री. That is why the rest of the country never liked us, because they thought Kashmiris, Indira Nehru के टाइम से they are always at the top. आज मैं बोलता हूँ अपने कश्मीरी को, अगर आप 10 बार भी जो भी बोलोगे, the BJP and these parties, they will never consider you non-Gandhi, no, because that is where these people came from. They'll never believe. They may say, but वो नहीं होगा, because और जो लोग आज इतनी देर, you lost that connection. और opportunism कितना, क्यों? ज़मीर नहीं है, हुई गलतियां मैं कहता हूं, और तभी मैं बोलता हूं बुशिस कुंसात बना दबसा उठो तुले मुश्किल क्या है? व्हाई डिड यू लेट योर ब्रेन्स एंड माइंड्स बीइंग रूल्ड बाय समथिंग दैट हैड नो लॉजिक? नो, सफर एंड पे द पेनेंस फॉर इट. एवरीबडी इज पेइंग. कहाँ है कश्मीरी पंडित? वहां उधर आधे कैंपों में, आधे कहीं पे आधे ये उठा रहे ढोल, आधे कुछ. ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है कि अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो गई, वक्त चेंज हो गया, बच्चे निकल आए. तुम गए डेनमार्क, तुम गए फिनलैंड, तुम गए नॉर्वे, तुम गए कोताम, तुम नो दुनिया. तिम फ़ायदा आए, नुकसान ति गो, आइडेंटिटी ति मॉकले, मगर यपर गई बद इकोनॉमिक. आई एम टेलिंग यू इट. सो देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट. इट्स पर सूफीज़म वनान छ, एब्सोल्यूट इज़ ओनली वन. च वंतस से क्या नाव दियुन, कह नो क्या वॉट एवर, बह वनस शिवा या क्या, मगर द क्वेश्चन इज दैट एब्सोल्यूट टी. वत छस वारिया, हेर सर कुन, टैंक कुन, वन यपर खससा सह गो ऐ तम कर क्या. चूँकि आपने एब्सोल्यूटिज्म की बात की, एब्सोल्यूट की बात की, तो वारिया ज़्यादा इंटरेस्ट अत मिस्टिसिज्मस मज, सूफीज़मस मज. कशीर मज कुछ तुथ खास तौर से पन्ने लैंग्वेज मज तुथ कह शायर ना तुम ज़्यादा परान छो, या यम तुम ज़्यादा बोजान ति छो, या कुछ तुथ गेवन वाला ना ज़्यादा पसंद ति छो? गोड ओस न तरह फिक्री. As I grew up, although I would speak Kashmiri, I am a total Kashmiri, but I wouldn't understand the real Kashmiri tasawwuf, is kalamos, which was linked to God, to divinity, to methods of getting to God, or whoever at the top, or realizing one own self, realizing that I am Shiva, myself, this is Shiva, you are Shiva. It's just that I am not able to see it. Realizing that this is a phone, but this phone I can see because there is a vacuum around it. So there is more to it which is indeterminate. Ye na fikri taran chi, ye na is panis at normal status mas hekan chi karit absorb to tam vatun. But everybody is endowed with those powers provided you go along those lines. Intense self-awareness. But poets, when you talk about poets, whether it is Prakash Ram Bhatt, whether it is Tairi Torum Mokta Fali Fali Razmas. Kya? Tairi Torum Mokta Fali Razmas. Tairi Torum Mokta Fali Fali Razmas. Khuni Jigar Cho Mein Gali Gali Razmas. You look Prakash Ram Bhatt, kahan dai pe. Now when you say it was trans religion, if you see the old poetry, whether it was Ahad Zargar, whether it was Shams Fakir, whether it was Wahab Khar, it was, there are so many of them. As I grew up, I started and I made an effort to understand it, to ask, to understand what is he trying to convey. And that thought was beautiful, because that in itself was one of the paths. That one has to think along. Intense self-awareness. Intense self-awareness. Pătimi khayalas te yat khayalas maz yus maz waqf os chayad ilse suyad lagi gatsun, that you are on the path. सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस. आई थिंक डॉक्टर साहब उस नोट पे हम आपसे रुखसत लेंगे.
बहुत अच्छा लगा और आपने डाइवर्स टॉपिक्स पे बात की, सियासत हो, मेडिसिन हो, कैंसर्स हो, और भी कुछ ऐसे जो है मुद्दे हैं जिन पे हमने बात की। लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि you were also seen with lot of separatists. You were very close to a lot of separatists. Was it a patient-doctor relationship or was it a political affiliation? No, it was a human relationship. I think whether I am a doctor or a lawyer or an engineer or a poet or an anchor and a media person, basically it is about human relationship. Human connect. Human connect. रास्ता तुम्हारा अलग होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। उधर जाने के रास्ते कई होंगे, लेकिन है तो वही टैंक, वही सर। But your own people lashed you for all that. That is okay. Whether people understand, don't understand, some understand it today, some may not understand it ever at all. But that's not a crime. People are free to think what. But it is what I understood of the whole thing. Separatists had their own philosophy. Whether it was right or wrong, that was theirs. Mine was if I take you as my patient, then I have a very sacred human relationship with you. And I cannot let anything else interfere with that. That is a infringement of that basic value of that relationship. And at no cost would I ever entertain that. I don't entertain it today. Unfortunately, Nazir, I have a bad habit, I must tell you. I stray across the table. Go, doctor should be yemi side, patient should be on side, milio kuch nosk, but the patient near Sokoda Sabas Havala, Katat Kyakarak, so go chon, milio kui metori pikri. I don't do that because Telish me sanun. अगर मैं से पज पट इलाज करन तेल मैं पज पट सनुन ये बच्चे सन्ने बे हमें तेल तेरी माली हालात से लेके तेरी दिमागी हालात से लेके then I have to look at you as a complete human being with so many aspects of it. If I don't change as many as I can, as in my power, I won't. That's a suchi yohai kya humana buso level so and I'm not into that. And I don't want to. That's who I am. I have to know myself. I know myself. I am a human being who strays across the table all the time. And I invest in relationships and I grow from those relationships. Myself, I have to grow. Why should you only be benefited? I have to be. How do I benefit? I benefit out of my experience of this relationship. I benefit ki I must be hechan. I must be tima par na. Yit purti kyon udu. No, there's no one way. There are many ways to the goal. It's just that you don't know. You are naive. And as you grow in life, you realize there are many ways to the goal. Thank you so much, Dr. Saab. Definitely there are many ways to reach to that goal, and we wish you all the best for all your endeavors, your spiritual endeavor, your endeavor in your medicine. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए. Thank you so much. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. Good night. God bless you. Good night.